हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, पार्ट 1 है। लेकिन बहुतों का क्वेश्चंस ये है कि सर आप मतलब क्यों डायरेक्ट क्वेश्चंस को रटा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चंस को मैं सिर्फ इसमें कोई समझा नहीं रहा हूँ। रीज़न ये है कि आप लोग अगर समझने जाओगे तो एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं, बस टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आजकल की एग्ज़ाम्स में 100 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में करना पड़ता है। अगर उस समय आप क्वेश्चंस को करने जाओगे तो टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। तो जितना हो सके आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चंस को। यही रीज़न है कि मैं इसमें समझा नहीं रहा हूँ। बाकी मेरा अदर वीडियोस भी है जिसमें मैंने डिटेल्स में समझाया हूँ और मैं बनाते रहूँगा बाकी वीडियोस जिसमें मैं डिटेल्स में समझाऊँगा आपको, आप लोगों को वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक सर्वेइंग, इरिगेशन, जितनी भी सब्जेक्ट्स है हर एक सब्जेक्ट्स में पार्ट बाय पार्ट समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू अवॉइड लार्ज सेंटरिंग एरर विद वेरी शॉर्ट लेग observations are generally made directly to a target fixed on the theodolite tripod on which theodolite may be fitted easily. Next question is, different grades are joined together by a, कौन सी ग्रेड होगा? डिफरेंट ग्रेड, अप ग्रेडियंट एज वेल एज डाउन ग्रेडियंट, दोनों को ज्वाइन किया जाता है बाय वर्टिकल कर्व्स। नेक्स्ट है, which of the following method of theodolite traversing is suitable for locating the details which are far away from transit station? कौन सा होगा? measuring angles of the point from at least measuring angles to the point from at least 2 stations. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the line of collimation method of reduction of level does not provide a check on, लाइन ऑफ कॉलिमेशन चेक प्रोवाइड नहीं करते हैं, ओनली इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड इन फोर साइड में प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट में नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर ए हिली टेरेन? कौन सी मेथड है? टेक्योमेट्रिक मेथड, विच इज मोस्ट सुइटेबल फॉर ए हिली टेरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द कॉर्ड ऑफ ए कर्व लेस देन पेग इंटरवल इज नॉन एज, विच इज लेस देन द पेग इंटरवल, दैट वन इज नॉन एज सब कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइज ऑफ द प्लेन टेबल, द प्लेन टेबल में हम लोग ट्राईपोड के ऊपर जो भी प्लेन टेबल रखते हैं उसकी साइज है 600 mm बाई 750 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the reduced bearing of a line is north 60 degree west and the length is 100 meter, then the latitude and departure respectively of the line AB will be। देखिए, नॉर्थ है, इसमें लाइन जो है एंगल बना के रखा है नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो लेटीट्यूड फॉर्म होगा, देखिए लेटीट्यूड एंड डिपार्चर, डिपार्चर जो है ये हम लोगों की, ये जो लाइन है ये लाइन फॉर्म होगी हॉराइजेंटल में वेस्ट के तरफ। तो क्लियरली मैं बता दे रहा हूँ, हॉराइजेंटल में फॉर्म होगी डिपार्चर और वर्टिकल में फॉर्म होगा लेटीट्यूड। अब जो डिपार्चर है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है तो डिपार्चर माइनस होगा और लेटीट्यूड प्लस होगा, क्योंकि लेटीट्यूड नॉर्थ की तरफ जाएगा। क्योंकि मैं फोर्स को रिजॉल्व करूँगा तो नॉर्थ और वेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो लेटीट्यूड विल बी प्लस, पहले प्लस होगा और दूसरा वाला माइनस होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और बाकी इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगा, कौन सा होगा? अब देखिए, ये जो लेंथ है ये 100 है, सो 100 अगर मैं करता हूँ 100 कॉस ऑफ 60, तो ये हो जाएगी हम लोगों की लेटीट्यूड, और 100 साइन ऑफ 60 करेंगे तो ये हो जाएगा डिपार्चर, मतलब माइनस में आएगा ये। तो अगर क्लियरली देखा जाए तो आंसर जो है लेटीट्यूड वो हो जाएगी कॉस 60 का मतलब है साइन 30, मतलब हाफ हो जाएगी, तो 100 की आधा 50 है, तो दिस वन विल बी द आंसर। ठीक है,
एंड दिस वन विल बी द अदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द lemniscate curve between the tangent will be transitional throughout if the polar deflection angle of its apex is delta by 6. Next question is contour interval is inversely proportional to the, ध्यान रखिए हमेशा contour interval जो है that is inversely proportional to the scale of the map. Next question is the smaller horizontal angle between the true meridian and survey line. Between the true meridian and survey line, ट्रू मेरिडियन के साथ जो भी ट्रू मेरिडियन के साथ जो सर्वे लाइन के साथ एंगल बनता है दैट वन इज नोन एज एजीमुथ। देखिए डीप जो है ये एंगल होगा जब मैग्नेटिक मेरिडियन और हॉराइजेंटल के साथ एंगल होगा, ठीक है। ये भी बियरिंग जो है जब मैग्नेटिक मेरिडियन एक लाइन के साथ एंगल बनेगा। डिक्लिनेशन जो है इट इज़ द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, लेकिन ट्रू मेरिडियन यही एक चीज़ है जिसमें मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, सिर्फ ट्रू मेरिडियन है। ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज एजीमुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज contour interval. Contour interval is the vertical distance between two consecutive contours. Horizontal distance, vertical distance between 2 points of same contour. Horizontal नहीं, बिल्कुल नहीं। So contour interval is the vertical distance, not horizontal distance between two consecutive contours. इसके बाद next question is check lenses or prof lenses in chain surveying are essentially provided to indicate the accuracy, मतलब check करने के लिए सर्वे वर्क की। नेक्स्ट है आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल टू द ट्राइपॉड द मेन ऑपरेशंस आर। प्लेन टेबल का मेन ऑपरेशंस क्या है? देखिए पहले हम लोग करेंगे इसमें पहले करेंगे लेवलिंग, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए LCO, लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंट। पहले हम लोग लेवल करेंगे, लेवल करने के बाद टेबल की जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट को हम लोग ग्राउंड में नीचे सेंटर करेंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन करेंगे। सो द आंसर विल बी लेवलिंग, ओरिएंट, सेंटरिंग एंड ओरिएंट। 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2 stations A and B, which of the statement is correct? The forebearing of AB is AB, BA, backbearing for differ from all of the above, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैंडम एरर ट्रेंड टेंड्स टू accumulate proportional to it tends to proportional to root L, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व स्क्वायर रूट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है in indirect method of contouring the process of locating or identifying points lying on a contour is called। इनडायरेक्ट मेथड में जो भी प्रोसेस लोकेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है दैट वन इज नोन एज वर्टिकल कंट्रोल, दैट वन इज नोन एज वर्टिकल कंट्रोल। इनडायरेक्ट मेथड, सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है दैट मेथड इज नोन एज वर्टिकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो साइन समझा रहा है ये क्या है? देखिए इसमें एक रोड ब्रिज है, एक रोड है ऊपर जा रहा है एक कैनल के नीचे, सो दिस वन इज द साइन ऑफ द रोड ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेशन जो है हो जाएगी ये, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज द टैप टू इंक्रीज। लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन मेजर्ड लेंथ जो है वो लार्ज नहीं होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे और रेलवे longitudinal sections are required, cross sections are required, both longitudinal and cross section, none of this. The answer will be for the construction of highway both longitudinal and cross sections are required. Next question है detailed plotting is generally done by radiation, traversing, resection, all of these. plotting जो किया जाता है by the help of resection and traversing और रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन। देखिए रीसेक्शन एंड ट्रेवर्सिंग जो है इन दोनों से ओरिएंटेशन किया जाता है। रीसेक्शन एंड ट्रेवर्सिंग से
ओरिएंटेशन किया जाता है एंड डिटेल्स को प्लॉट करने के लिए रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन यूज़ किया जाता है, रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन। तो डिटेल प्लॉटिंग इज डन बाय रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज लॉन्गर, वर्नियर हमेशा छोटा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे लॉन्गर बोल रहा है तो ये उल्टा हो जाएगी, दैट इज रेट्रोग्रेड वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ रिवर्सल, it is option number both A and B. Next question is the line which is normal to the plumb line is known as, plumb line की जो normal है that line is always known as the level line. उसके बाद next question है in leveling operation when the instrument is being shifted the staff must not be moved, when the staff is being carried forward the instrument must remain stationary, both A and B, option number A and B, C. Next question is the 2-point problem and 3-point problems are the method of resection, orientation, traversing, resection and orientation, both the resection and orientation. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम्सडेन आई पी एस कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है उसमें आई पी एस में क्या होता है। रैम्सडेन आई पी एस कंसिस्ट ऑफ ए टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट विद द कन्वेक्स सरफेस फेसिंग ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ साइट इज केप्ट एज हाई अबव ग्राउंड सरफेस एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द एरर इन द ऑब्जर्व्ड एंगल ड्यू टू बोथ शिमरिंग एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इफ द स्टेडियम, देखिए D इज इक्वल टू के एस प्लस सी, K इज द मल्टीप्लाइंग एंड C इज द एडिटिव कांस्टेंट, K इज इक्वल टू F बाई I एंड C इज इक्वल टू द F प्लस D। सो यहाँ पे F बाई I ढूंढो, इसे ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजायर्ड सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब विद 2 mm डिवीजन इज 30, the radius of the bubble tube is sensitivity is equal to formula एक है 206265 into dash by L। तो यहाँ से हमें मिलेगी सेंसिटिविटी की वैल्यू है 13.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, सब्सटेंस बार की क्या काम होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन प्लेन एंगल, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस इन undulated areas, मेजरमेंट ऑफ एंगल। सो सब्सटेंस बार का काम है, सब्सटेंस बार इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स इन अनडुलेटेड एरियाज, इसमें मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ द आर्टवर्क मे बी कैलकुलेटेड बाय मीन एरिया, इंड एरिया, ट्रेपेजर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tachyometric formula for horizontal distances using horizontal side can also be suitable be employed for inclined side through theta by multiplying the constant by cos square theta and additive constant by cos theta. Next question is pick up the correct statement from the following. The answer will be all of this. Next question is in leveling operation more than fast it represents as a rise, second reading अगर ज़्यादा है तो it represents as a rise not rise, if the first reading is more than second it represents as a rise and if the first reading is less than second it represents both. So option is option number D, both. Next question is overturning of vehicles on a curve can be avoided by using, overturning को हम लोग avoid कर सकते हैं by the use of vertical curves, compound curve, reverse curve, transitional curves, by using transitional curves. Next question is which of the following introduces an error of about 1 in 1000 in 20 meter chain is used all of the above. Next question is chain serving is when adopted for small area with crowded detail, small area in open ground. It is used for small area in open ground.
तो ये यूज़ किया जाता है छोटा एरिया के लिए और जिसमें डिटेल्स ज़्यादा ना हो, इन ओपन ग्राउंड। टू contour lines as having the same elevation cannot unite together, can unite together. Two contour line having the same elevations can unite together, ठीक है। दो contour line अगर elevation सेम हो, they can unite together, they can form one line. नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए एक रेलवे जो है नीचे जा रहा है, रोड ऊपर से जा रहा है। ब्रिज कैरिंग रोड बिलो रेलवे ना, ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Error due to refraction may be completely erroneous. Tilting levels is commonly used beside the last reading of leveling is a foresight. यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना चाहिए था which of the following statement is correct, क्योंकि सभी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लेवलिंग ऑपरेशन the first sight on any change point is back side, second is change point is the second sight on any change point is foresight, the line commences with a foresight and closes with a back side. Now the line starts with a back side and closes with a foresight, option number D. Next question is the length of a transverse leg may be obtained by multiplying the latitude and which one, by latitude and secant of the reduced bearing, ठीक है, by multiplying the latitude and secant of the reduced bearing. Next question is while working on a plane table the correct rule is intersection should be actually drawing secondary short distances sufficiently contain all the points is draw continuous lines from all station point. The correct rule is draw the short rays sufficient to contain the point short. The vertical angle between longitudinal axis of a freely suspended magnetic needle and a horizontal line at its pivot is known as, इसके साथ horizontal line के साथ, that one is known as a dip. Next question is in the cross section of indirect contouring the space of cross section depends upon contour interval, scale of map, characteristic of ground, all of this. Next question is transitional curves are introduced at either end of a circular curve to obtain gradual change of gradient from 0 at the tangent point to the specific amount at the junction of the transverse curve with main curve, 0 से लेके कुछ वैल्यू तक. Next question is cos theta is equal to the answer will be cos theta is equal to cos theta minus of sin alpha sin beta divided by cos alpha cos beta. Next question is tilt of a staff in steady tachometry increases the intercept if it is tilt will be increased if it is away from the telescopic point uphill, if it is away from the telescopic telescope pointing uphill. Next question 3-point problem can be solved by tracing paper method, Bessel's method, Lemon method, all of this, option will be all of this. Next is a dumpy level is set up with its eye pitch vertical over a peg, the height from the top of the center to इतना, ठीक है, आई पीस इस इतना, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टू इज 0.770, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है in a lemniscate curve the ratio of the angle between the tangent at the end of the polar ray and the straight and the angle between the polar ray and the straight is, what will be the angle? The angle will be 1.5, 3/2. The following figure is a conventional sign of, ये साइन जो है ईदगाह की है, ठीक है। ध्यान रखिए बहुतों का ऑप्शन गलत हो जाता है, इसमें मॉस्क लगा देते हैं, मस्जिद लगा देते हैं, रॉन्ग, ईदगाह।
Next question is a level set up 25 meter from peg and 50 meter from peg which is sitting on staff. देखिए इसमें हमें क्या करना है, दोनों ये के रखा है, दोनों की रीडिंग को माइनस करके एवरेज निकालनी है। ठीक है, कैसे करना है, 3.462 माइनस ऑफ 2.847 जो वैल्यू आएगा, और एक वैल्यू आएगा 284.295 माइनस ऑफ 283 सॉरी नहीं, इस तरीके से नहीं। लेवल व्हेन सेट अप 25 मीटर फ्रॉम पेग ए एंड 50 मीटर फ्रॉम पेग बी reach itna on the staff held on A and itna on the held B, keeping bubble at its center while eating. If the reduced level of A and B are the collimation error पर 100 mm के लिए पूछ रहे हैं collimation error, the for the 100 mm the collimation error will be कितना हो जाएगी 0.060। ठीक है, 0.060 हो जाएगी 100 मीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद हाइड्रोग्राफ। हाइड्रो नाम से ही पता लग रहा है इट इज़ लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द लार्ज वाटर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाउदिच रूल इज अप्लाइड टू एन ओपन ट्रेवर्स फॉर ग्राफिकल एडजस्टमेंट ए क्लोज ट्रेवर्स। बिल्कुल सही, इट इज़ फॉर द क्लोज ट्रेवर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द क्लोजिंग एरोल। नेक्स्ट इज angles to a pivot station. Given pivot is observed from a number of transverse stations. When plotted, the line to the pivot station intersect at a common point. तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगी एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स एंड ऑल्सो प्लॉटिंग ऑफ द ट्रांसवर्स आर करेक्ट। एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स बोथ एंड ऑल्सो प्लॉटिंग ऑफ द ट्रांसवर्स इज करेक्ट। नेक्स्ट पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। The horizontal angle between magnetic meridian and two meridian at a place is called magnetic declination. बिल्कुल सही, magnetic declination बोला जाता है। Next is imaginary wave passes through points at which magnetic declinations are equal at times called isogonic lines. The isogonic line through places at which the declination is 0 are termed as agonic lines. हाँ बिल्कुल सही, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगी ऑल ऑफ दिस। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, आइसोगोनिक और एगोनिक बहुत कन्फ्यूजन होता है। आइसोगोनिक एंड एगोनिक कहाँ है, एगोनिक। ठीक है, स्टाम्ड एगोनिक। आइसोगोनिक का मतलब है सेम और एगोनिक का मतलब है जीरो। जीरो को जब ज्वाइन किया जाता है तो एगोनिक बनेगा, सेम को जब ज्वाइन किया जाता है आइसोगोनिक बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट पैरेलल एंड वाइडली स्पेस कंटूर्स रिप्रेजेंट। स्ट्रेट है, पैरेलल है एंड वाइडली स्पेस्ड है। इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई। कहाँ पे लाई करेगा? The real image must be which is formed by the objective must lie in the plane of the crosshairs. Crosshairs के plane में lie करेगा। Next question is for a tachymeter the additive and B is equal to KS plus C। ध्यान रखिए ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये 100 है और ये जीरो है, तो 100 एंड जीरो एडिटिव है। सॉरी, हमें पूछ रहा है एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लाइंग जो है वो 100 है और एडिटिव 0 है, तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, देख के लगानी है, डायरेक्ट नहीं। 0 एंड 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय एन erroneous chain is error out of correct chain into observed length. The answer will be error chain length out of correct into observed distance. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज an imaginary line lying throughout on the surface of the earth and preserving a constant inclination to the horizontal. Constant inclination to the horizontal is called contour. That line is called as the constant inclination. That one is called as contour gradient. That line is called as contour gradient. Next is the constant vertical distance between two adjacent contours is called that one is called as contour interval.
Next question is 30 meter chain diverges a perpendicular distance from its correct line. The error in the length is d square by 60 meter. D square by 60. Next question, the sensitivity of the bubble tube can be increased by increasing the diameter of the tube. बिल्कुल सही. Diameter अगर increase कर देंगे तो sensitivity of the bubble tube can be increased. Next question is standard tape length given. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा minus of 0.000909 minus. Next, pick up the correct statement from the following. It is difficult to eliminate an error completely at first trial. Instability of the instrument make it almost impossible to adjust it satisfactorily. Adjustment screws must be left bearing firmly but should never be forced. All of the above. Correct? तो सारा ही है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटोजेनस कर्व फॉर ऑटोमोबाइल्स आर गिवन बाय बर्नौलीज लैम्बडा स्केल. इट इज गिवन बाय बर्नौलीज लैम्बडा स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चेन सर्विंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू चेन सर्विंग में लीनियर मेजरमेंट्स होंगे. देखिए हम लोग जब चेन से मेजर करते हैं सिर्फ लेंथ को मेजर करते हैं, एंगल वगैरह नहीं मेजर कर सकते. सो ओनली लीनियर मेजरमेंट्स. The difference of level between two station A and B is to be determined. For best result, the instrument must be equidistant from A and B. Same होना चाहिए. Next question is the curve composed of two arcs of different radii. Two arcs of different radii having their center on the opposite side of the is known as. Such kind of curve is known as a reverse curve. ऐसा ये हो गया आप लोगों का reverse curve. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व इज द एंगल बिटवीन. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये किस किस के बीच में एंगल. इट इज़ द एंगल बिटवीन बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट बैक एंड फॉरवर्ड. सो बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच में एंगल है. इसके बाद डेल्टा डी इंटू एल बाई एल ऑप्शन हो जाएगी इसकी. सो इसका आंसर जो है डेल्टा डी इंटू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज चीपर देन इनडायरेक्ट. इंटरविजिबिलिटी ऑफ पॉइंट्स इन अ कंटूर मैप कैनॉट बी सर्टेन स्लोप ऑफ द हिल कैन बी डिटरमाइंड इन द हेल्प ऑफ कंटूर्स. कंटूर इंटरवल ऑन एनी मैप इज कंटूर इंटरवल्स ऑन एनी मैप इज केप्ट कांस्टेंट. देखिए भले सब मैप में डिफरेंट हो लेकिन कोई भी एक मैप में पर्टिकुलर मैप में जिसमें हम लोग कंट्रोल लाइंस बनाएंगे उसमें कंटर इंटरवल जो है वो सेम रखा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है इन टैकोमेट्री और जो वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग इज जनरली प्रिफर्ड टू नॉर्मल स्टाफ ड्यू टू ease of reduction of observation facility of holding due to minimum effect of careless holding on the result. Due to minimum effects on the careless holding on the result. Next is whole circle bearing of the line is preferred to a quadrantal bearing merely because bearing is completely specified because of bearing is completely specified by an angle. Next question is it is more difficult to obtain good result while measuring horizontal distances by stepping up the hill. By stepping uphill. Next question is pick up the correct statement from the following. इसका आंसर जो है वो हो जाएगी the apparent on reverse is twice the actual error. तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगी डी. ठीक है, सारे ही करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन is which of the following method of plane table surveying is used to locate the position of an inaccessible point. inaccessible point के लिए traversing, resection, intersection and radiation. जो पॉइंट लोकेट नहीं कर सकते इनएसेसिबल है उसके लिए हम लोग इंटरसेक्ट करके करेंगे. सो इंटरसेक्शन मेथड. नेक्स्ट इज इमेजिनरी लाइन पासेस टू हैविंग इक्वल के लिए मैंने अभी बताया था आइसोकोन राउंडस आइसोकोन.
Next question is, which one of the following statement is correct? All of this. Next question is, in geodetic surveying, higher accuracy is achieved if the curvature of the art surface is taken into account. The bearing of the line AB and BC is इतना, the included angle between AB and BC is, included angle की value कितना होगा? It will be the included angle between ABC is 102 degree. Next question है, transit rule of adjusting the consecutive coordinates of a traverse is used where? Angular measurement, numerical and linear and angular measurements are of the all of this. नहीं रुकिए इसमें ऑल ऑफ दिस नहीं लगानी है. रीज़न है कि एंगुलर मेजरमेंट से सर मोर एक्यूरेट. ट्रांजिटिंग रूल आर यूज्ड वेयर एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर एक्यूरेट देन लीनियर मेजरमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. द लाइन ऑफ साइट विच ऑब्जर्व बेस्ट ऑफ इट मेजर्ड द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस टू. हाँ, इसका आंसर जो है ये हो जाएगी ऑल ऑफ दिस. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रफ ओरिएंटेशन द ऑपरेशन ऑफ रिसेक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. इसका स्टॉप जो है वो हो जाएगी 1, तो सबसे पहले होगा ही रफ ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल. उसके बाद ड्राइंग लाइंस बैक थ्रू द 3 कंट्रोल पॉइंट्स. उसके बाद द 3 लाइंस फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ एरोर. उसके बाद सिलेक्टिंग ए पॉइंट ऑन द ट्राइंगल. सो 1, 3, 2, 4, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f3 applicable only to all of the above. Next question is, for two difference in elevation between 2 points and the level must be set up at the exact midpoint of A and B. Next is, if the focal length of the object glass is 9, the distance from the object glass to the two nearest is the additive constant f plus d. तो दोनों को सम अप करेंगे तो 40 आएगा, that is 0.4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, diurnal variation of magnetic declination is less at equator than near the poles. सबसे ड्यूरनल वेरिएशन जो है पोल्स में ज़्यादा होगा. सो लेस एट इक्वेटर दैन नियर द पोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैंकाइन्स डिफ्लेक्शन एंगल इन मिनट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाय द डिग्री ऑफ द कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ डबल लाइन रिवर contours are always stopped at the edges of the river. Next question is, the branch of surveying in which horizontal and vertical position of the point are determined by making instrument observation is known as tachymetry, telemetry, all of this. So correct answer will be all of this. ठीक है. Refraction correction completely eliminates curvature. हाँ, correction for curvature and refraction. So refraction आधा, so partially eliminates curvature corrections. ठीक है. तो बस इतना ही था आज की लेक्चर में. मैंने टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चंस बता दिया. ठीक है. बाकी जो 100 क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बताऊंगा अबाउट सर्वेइंग. ठीक है. तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. ओके.